धारा रे आज भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स रो लोकार्पण उत्सव पई अतिथि माने पहुंचबा आरंभ हो गलानी। माननीय मंत्री राजस्व विपर्य परिचालना श्री सुरेश पुजारी महोदय पहुंची सारे। माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास महोदय, समस्त अतिथिगण, माननीय मुख्य न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय समस्त अभिनंदन जनाउछन्ति। आजिकार मुख्य अतिथि उद्घाटक माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदय को समस्त चित्र को आम लाइव आपण को देखू। फलक उन्मोचन समय Honorable President of India will unveil the plaque and officially dedicate Bhubaneswar Judicial Court Complex to the people of Odisha. माननीय राष्ट्रपति माननीय राज्यपाल उपस्थिति रे लोकार्पित हो जाइए भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स। पुष्प आलोक सुसज्जित न्याय व्यवस्थार ए सुंदर आधारशिला जहाँ राजधानी नूतनतम गर्व गौरव कहले अत्युक्ति हेब नाही। रिबन काटी माननीय राष्ट्रपति महोदय समस्त अतिथिंकर उपस्थिति रे प्रवेश करिसेंती भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स परिसर रे, जहाँ तांकर आतिथ्य पाई आज विशेष भाव में सजा जाइछि। आपण माने दृश्य देखि पारुछंती। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधीश, माननीय मंत्री राजस्व विपर्य परिचालना समस्तक उपस्थिति रे लोकार्पित हेउछि। महात्मा गांधींकर सुंदर प्रतिमा मन पड़ुछि से शब्द, वैष्णव जन तो तेने कहिएज, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोये, मन अभिमान न आने रे. One man who inspired the whole world to choose the path of truth and non-violence. I think the presence of the father of the nation in the premises of Bhubaneswar Judicial Court Complex will definitely give us courage to seek truth no matter what the cost is, and will remind us all the importance of social justice. एक फटचित्र जहाँ को आम साइती रखा आम हृदय आज माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री राजस्व विपर्य परिचालना, माननीय मुख्य न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय एवं खोर्धा जिलार न्यायालय प्रशासनिक न्यायाधीश एवं सेवारंक सहधर्मिणी मानक सह किछि विशेष अतिथिंक सह माननीय राष्ट्रपति महोदय एक ऑफिशियल फोटोचित्र उत्तोलन करुछंती. This will be etched in our memories forever. The graceful presence of Honorable President of India that marks the dedication to the nation ceremony of Bhubaneswar Judicial Court Complex. There cannot be a better moment to be really, really proud of. The legal and judicial fraternity of Odisha is absolutely thrilled with the presence of Honorable President of India at the inauguration and dedication to the people of Odisha ceremony of Bhubaneswar Judicial Court Complex that absolutely stands tall and proud to deliver justice with state-of-the-art facilities, with latest technologies. Odisha will proudly say this is how strong our judicial system these days is. माननीय राष्ट्रपति महोदय प्रस्थान करुछंती. अल्प समय मध्य मंच रे पदार्पण करेंगे. पुनर्बार समस्त को अनुरोध करी मोबाइल फोन्स गुड़ी को साइलेंट मोड रे रखंतु, ना स्विच ऑफ कर दियंतु एवं कार्यक्रम समय रे फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करबा निषेध. समस्त को अनुरोध करू कार्यक्रम शेष होला परे भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स परिदर्शन करने को भूलिबे नाही. It's been a lot of hard work by the host team to beautifully decorate the complex for this big day, and we would love to see your
pictures on social media, flaunting this latest landmark of Bhubaneswar and thanking the host team. प्रस्थान कर सारी माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया किछि समय मध्य मंच उपरे आगमन करेंगे। समस्त को अनुरोध शांति श्रृंखलार सहित निज स्थान में बसी रुहतु। मोबाइल फोन्स गुड़ी को साइलेंट मोड रे रखंतु। As soon as you see me walking from there, just make people stand.
just after the ma'am का address इसी का होता है, just say thank you ma'am. I request you. पुलिस बैंड को प्ले राष्ट्र नाचगान ऑनरेबल चीफ जस्टिस को जो ये जो प्रोटोकॉल रे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो जगह आगुरी चीफ मिनिस्टर ना जो जगह थी से जगह माने ये जो चीफ जस्टिस का नाटा जो पढ़िबे हाँ हाँ आगे द्रौपदी मुर्मू तापर राज्यपाल तापर चीफ जस्टिस हाँ आउ से जो अच्छा मंत्री तो पद रहिबे तापर मंत्री रहिबे चीफ जस्टिस का पर मंत्री रहिबे तापर संगम सर अच्छा ओके और से जो आरडा जो हमर मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम रे भी से हिसाब करेक्शन दे कर देबे प्लीज से ताले आगो होछंती मंत्री आगो संगम साहब वेलकम तापर मंत्री तापर चीफ जस्टिस सर वो नमस्कार जय जगन्नाथ मुशुलग्न आपण मानक भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लोकार्पण उत्सव को स्वागत करुच्ची अल्प समय मध्य आम गण उपस्थित हेबे आजिकार मुख्य अतिथि उद्घाटक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया अनुरोध करी जितेबाला से उपस्थित हेबे आम समस्ते तांकु छिड़ा हे सम्मान जणाइबा। बंधुगण आम गहन उपस्थित होती माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पुलिस बैंड को अनुरोध करी राष्ट्रगान परिवेषण करेंगे।
जय हिंद। आसन ग्रहण करंतु। आम गणर उपस्थित आजिकार मुख्य अतिथि उद्घाटक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, तांको सहित मंच उपर उपस्थित अछंती माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय श्री चक्रधारी शरण सिंह महोदय, माननीय मंत्री राजस्व एवं विपर्यय परिचालना ओडिशा सरकार श्री सुरेश पुजारी महोदय, माननीय न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय तथा खोर्धा जिला न्यायालयर प्रशासनिक न्यायाधीश श्री संगम कुमार साहू महोदय, समस्त अतिथि मानक मंच उपर स्वागत करुछु। बंधुगण, न्याय व्यवस्था को सशक्त सुदृढ़ करिबारे एवं जनसाधारण अधिवक्ता मानक कोर्ट परिसर रे समस्त सुविधा सुजोग जोगाई देबारे भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स एक ज्वलंत उदाहरण सृष्टि करिछि। सेथिपाई खोर्धा जिला न्यायालय परिवार को शुभेच्छा अभिनंदन जणाइबा सहित खोर्धा जिला न्यायालयर माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश श्री संगम कुमार साहू महोदय को अनुरोध करी आनुष्ठानिक भाव में स्वागत भाषण रखिबे। शुभ संध्या, नमस्कार। मंच उपरे उपस्थित थिबा भारत वर्षर राष्ट्रपति सम्माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, ओडिशार राज्यपाल सम्माननीय श्रीयुक्त रघुवर दास महोदय, ओडिशा उच्च न्यायालयर सम्माननीय मुख्य विचारपति श्रीयुक्त चक्रधारी शरण सिंह महोदय, ओडिशार राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री श्रीयुक्त सुरेश पुजारी महोदय, सभा कक्षरे उपस्थित थिबा ओडिशा उच्च न्यायालयर अन्य समस्त विचारपति वृंद एवं सेमानकर सहधर्मिणीगण, ओडिशा उच्च न्यायालयर पूर्वतन विचारपति वृंद, ओडिशा उच्च न्यायालयर रजिस्ट्रार जनरल एवं रजिस्ट्रीर अन्य ऑफिसर वृंद, जिला दौरा जज खोर्धा भुवनेश्वर एवं समस्त विचार विभागीय अधिकारीगण, सभा कक्षरे उपस्थित थिबा समस्त निमंत्रित अतिथि, भुवनेश्वर बार एसोसिएशन तथा खोर्धा जिलार अन्य समस्त बार एसोसिएशन सभापति, संपादक, अन्य कर्मकर्ता तथा समस्त आईनजीवी बंधुगण, ये कार्यक्रम को सीधा प्रसारण जरिया देखुथिबा समस्त विचार विभागीय अधिकारी एवं व्यक्ति विशेष वृंद तथा मोर अति प्रिय गणमाध्यम सांबादिक बंधुगण, मंदिर मालिनी नगरी एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर रे स्वाधीनता संग्रामी बक्सी जगबंधु विद्याधर नाम रे नामित यही स्वयं शासित महाविद्यालय प्रांगण मु आपण समस्त को स्वागत करुछि। आज ओडिशा न्यायपालिका पाई अति आनंदर दिन। खोर्धा जिला न्यायिक परिसर भुवनेश्वर रे आज जो सुंदर मनोरम न्यायिक भवनटी उद्घाटित हैला, यह आम समस्तंकर विशेषकरी भुवनेश्वर बार एसोसिएशन रे वकिलाती करुथिबा आईनजीवी मानकर बहुत दिन स्वप्न थिला। 25/1/2014 तारीख रे यार शिलान्यास होइतिला। 11/3/2018 तारीख रे भूमि पूजा होइतिला। एही न्यायिक भवन रे समुदाय 55टी कोर्ट हॉल रही, जो 6टी रे कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, स्टेट एजुकेशन ट्राइब्यूनल, लेबर ट्राइब्यूनल, स्पेशल जज स्पेशल कोर्ट एवं ऑथराइज्ड ऑफिसर कोर्ट कार्य करिवो। अर्थात
जनसाधारण गोटे परिसर भितर एते गुड़ी अदालत को जाई निज निजर कार्य नहीं आसबार सुविधा पाइबे। सरकारंकर पूर्ण सहयोग एवं यार निर्माण रे संपृक्त विभिन्न विभाग तथा व्यक्तिविशेषकर निष्ठापर प्रयास जोगु आज यह संपूर्ण हो पारछि। समाज परिवर्तनशील सेपरी न्याय व्यवस्था एवं यार भित्तिभूमि रे मध्य परिवर्तन आवश्यकता रही। आज जो न्यायिक भवनटी उद्घाटित हैला ताहा देशर एक उत्कृष्ट न्यायिक भवन भितरे अन्यतम, जहाँकर करकमल रे यह उद्घाटित हैला तांको पई आमे समस्त ओडिया गर्वित। से ओडिशार गौरव वृद्धि करिसेंती। तांकर रायरंगपुर नुआ दिल्ली रायसीना हिल रे अवस्थापित राष्ट्रपति भवन रो यात्रा अविस्मरणीय और इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो। से महान व्यक्तित्व और आम समस्तंकर प्रिय सम्मान्य राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया को मु स्वागत करुछि। स्वागत करुछि ओडिशा राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास महोदय को। स्वागत करुछि आमर प्रिय मुख्य विचारपति श्रीयुक्त चक्रधारी शरण सिंह महोदय को, जे कि ओडिशार न्यायपालिकार मुख्य हिसाब रे दायित्व ग्रहण करिवा परठारु अनेक किछि वैप्लविक परिवर्तन आनिचंती। जो जिला गुड़िकरे अनुमोदित न्यायिक परिसर नाही से सबु स्थान को निजे जाई जागा गुड़िक देखी बार मेंबर को सहित साक्षात करी जिला प्रशासनिक अधिकारी मानक सहित आलोचना करी कार्य को आग को नहीं चंती। तांकर व्यक्तिगत प्रचेष्टा जोगु कटक, भुवनेश्वर, केन्दुझर एवं पुरी रे नूतन न्यायिक भवन खूब शीघ्र निर्माण हेबाकु जाउछि। एथिपाई ओडिशार न्यायपालिका तांक निकट रे चिरऋणी होई रहिबो। स्वागत करुछि ओडिशार राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री श्रीयुक्त सुरेश पुजारी महोदय को। ओडिशा सरकार गत किछि मास भितरे ओडिशार न्यायपालिका रे नुआ भित्तिभूमि, नुआ प्रकल्प बाबदरे, नुआ विचार विभागीय पदपदवी सृष्टि करिवारे, नुआ अदालत खोलिबा दिगरे एवं अन्यान्य आनुषंगिक सुविधा जोगाई देवा दिगरे समस्त सहयोग प्रदान करिसेंती। सरकारंकर सहयोग जोगु अति स्वल्प समय मध्यरे 30 टी कोड सहित 275 टी विभिन्न पदपदवी सृष्टि होईछि। एही सबु कोर्ट खोलिबा द्वारा लोकमानंक पाखरे त्वरित न्याय स्वल्प खर्चरे पहुँची पारिबो। सेही भली उच्च न्यायालय रे कार्य सुचारू रूप संपादन करिवा पाई 190 टी विभिन्न पदपदवी सृष्टि होईछि। सरकारंकर सहयोग बलरे अन्य जिला मानकरे आमे खूब शीघ्र न्यायिक भवन निर्माण करिवा को जाउछु, जहाँ लोकमानकु न्याय प्रदान दिगरे बहुत सहायक हेबो। भुवनेश्वर बार समस्त आईनजीवी मानकु मु एई अवसर रे विशेष भाव रे शुभेच्छा जनाउछि। सर्वोच्च न्यायालयर पूर्वतन मुख्य विचारपति कहिसेंती विचारपति माने लोकमानकर सेवा करिवा पाई अछंती। आईनजीवी बंधु माने एई सेवारे विचारपति मानकु सहयोग करंतु। भुवनेश्वर बार एसोसिएशन सदस्य मानकु अनुरोध करिबी से माने एही सुंदर प्रकल्पर पवित्रता, श्रृंखला और परिष्कार परिच्छन्नता बजाय रखिबे। अन्य समस्त व्यक्ति विशेष जो माने आज ये सभा कक्ष उपस्थित अछंती बा जो माने आभासी व्यवस्था माध्यम रे योगदान करिसेंती सेमानंकु समस्तंकु मो स्वागत करुछि। प्रभु जगन्नाथंक निकट रे प्रार्थना करुछि जे से ओडिशार न्यायिक व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़
एवं सफल करिबा पई एथि सहित संश्लिष्ट थिबा समस्त व्यक्ति विशेष को आशीर्वाद दियंतु। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे उत्कल जननी। स्वागत रे सुंदर शब्द पाई कोटि धन्यवाद माननीय जस्टिस श्री संगम कुमार साहू महोदय। बंधुगण, आजिकर विशेष अवसर में आम अतिथि मान उपस्थिति मंचर गारिमा को शतगुणित करुछि। भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स आकृतिर प्रीति उपहार प्रदान करी आमे एही मुहूर्त को चिर स्मरणीय करने को चाहिबू। अनुरोध करी माननीय मुख्य न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय माननीय श्री चक्रधारी शरण सिंह महोदय को से माननीय राष्ट्रपति महोदय को उपढौकन प्रदान करेंगे। आपण मानक अनुरोध करताली सहित आमे माननीय राष्ट्रपति महोदय को स्वागत जनइबा, धन्यवाद जनइबा आज यह विशेष अवसर में आम गहन में थिबारु। धन्यवाद माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय। अनुरोध करी माननीय न्यायाधीश श्री संगम कुमार साहू महोदय को से माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास महोदय को उपढौकन प्रदान करेंगे। करताली एवं अभिनंदन माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास महोदय जहाँकर उपस्थिति आजिकार अवसर को आहुरी अधिक विशेष आकर्षणीय करुछि। उपढौकन प्रदान करुछंती माननीय न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय श्री संगम कुमार साहू महोदय। धन्यवाद माननीय न्यायाधीश श्री संगम कुमार साहू। अनुरोध करी खोर्धा जिला और दौरा जज श्री निशांत महोदय को से माननीय मुख्य न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय श्री चक्रधारी शरण सिंह महोदय को उपढौकन प्रदान करेंगे। धन्यवाद श्री निशांत महोदय। अनुरोध करी भुवनेश्वर अधिवक्ता संघर सभापति श्री कुंदन रथ महोदय को से माननीय मंत्री राजस्व एवं विपर्यय परिचालना श्री सुरेश पुजारी महोदय को उपढौकन प्रदान करेंगे। भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स रे आकृतिर प्रीति उपहार आम अतिथि मान सबुदिन ए विशेष अवसर स्मृति मन पकईदेव सम्मानित करुछंती भुवनेश्वर अधिवक्ता संघर सभापति कुंदन रथ, माननीय मंत्री ओडिशा सरकार राजस्व एवं विपर्यय परिचालना श्री सुरेश पुजारी महोदय को। धन्यवाद सभापति श्री कुंदन रथ महोदय। अनुरोध करी भुवनेश्वर अधिवक्ता संघर संपादक श्री दीपक कुमार दास महोदय को से ओडिशा उच्च न्यायालय माननीय न्यायाधीश श्री संगम कुमार साहू महोदय को उपढौकन प्रदान करेंगे। धन्यवाद श्री दास। बंधुगण, के भाव में राज्यर न्याय व्यवस्था को सशक्त समर्थ करिबारे भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स एक गुरु दायित्व रहिबो। आसंतु देखिबा एक क्षुद्र चित्र माध्यम। कैन वी हैव द ऑडियो विजुअल प्लीज। आज ओडिशार न्याय व्यवस्थार दिग्बलय उदित एक नूतन सूर्य भारतर महामहिम राष्ट्रपति करकमल लोकार्पित होईछि भुवनेश्वर न्यायिक परिसर बा जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स। आसंतु अत्याधुनिक निर्माण कारीगरी निर्मित एही न्यायर मंदिर परिदर्शन करिबा। जनसाधारण सुविधा पाई व्यवस्था करा जाइछि सहायता केन्द्र। मामलारे पक्षभुक्तଙ୍କ सुविधा और सेवा पाई व्यवस्था करा जाइछि ई सेवा केन्द्र। फाइलिंग काउंटर बा पंजीकरण केन्द्र रे जन व्यक्ति बा ता वकील मामला को अति सहज और सरल प्रणाली रे दायर करि पारिबो। मामलार तारीख बा तत्संपर्कित जेकोसी विषय रे अधिक बा तत्कालिक सूचना प्रदान करिबा पाई व्यवस्था करा जाइछि सूचना केन्द्र।
ପକ୍ଷମାନେ ନିଜ ମାମଲାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ସର୍ଭର ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଦାଲତର ଔପଚାରିକତା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏକ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଦୀର୍ଘକାୟ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଚାରପତି, ଓକିଲ, ମହକିଲ, କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତଃମଣୀୟ ସାକ୍ଷୀ ବା ଭଲରେବୁଲ ୱିଟନେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ଭୟ, ଚାପ ବା ସଂକୋଚରେ ନିଜ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆଭାସୀ ବା ଭାର୍ଚୁଆଲ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଦୃଶ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଗୃହରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦାନ କରିହେବ। ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ପରାମର୍ଶ କକ୍ଷ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କକ୍ଷରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆଇନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନର ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ଉଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟିକ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଓ ଜନତା ଅଭିଭାଜକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶସ୍ତ କୋଠରୀ। କୋର୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ନ୍ୟାୟିକ ପରିସରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ସଫା ଗୃହମାନ। ସ୍ଥାନର ଉଚିତ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାନବାହନ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ସ୍ଥାନ। ଏହା ହେଲା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନ୍ୟାୟିକ ପରିସରର କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା। ନ୍ୟାୟିକ ପରିସର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ବିନମ୍ର ଉପହାର। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी स्पेशल अम्यूनिटीज सहित राज्यर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने आज प्रतिश्रुतिबद्ध भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स मु गोटे अभिनंदन करताली चाहिए। बंधुगण आजिकर विशेष अवसर में मन पड़ुछि उत्कल गौरव मधुसूदन लेखा शब्द जाति इतिहास जातिर निर्झर तहु बहे सदा जाति प्राणधार से धारु नीर पिउछि जे नर निश्चय हेब से जाति कर्मवीर से भाई भाव में जड़े कर्मवीर जी आम गण उपस्थित अच्छा जे ओडिशार न्याय व्यवस्था को स्वच्छ निरपेक्ष सशक्त करने संकल्पबद्ध माननीय मुख्य न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय श्री चक्रधार से चरण सिंह महोदय को अनुरोध करी सभा को संबोधित करेंगे। Honorable the President of India,
Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable the Governor of Odisha, Sri Raghuvar Das ji, Honorable Minister of Revenue and Disaster Management, Government of Odisha, Sri Sujesh Puyari ji, Honorable Mr. Justice Sangam Sahu, Judge High Court of Odisha, Honorable Ministers of State of Odisha, my esteemed sister and brother judges, Honorable former judges of the High Court present, the Chief Secretary, the Director General of Police, Odisha, and other officials of the state government present, the officials of the President of India's Secretariat present, the President, Secretary, and office bearers of the Bhubaneswar Bar Association, learned senior advocates, and members of the legal fraternity, all the judicial officers present, ladies and gentlemen. ମୁଁ प्रथमे आपण माननको अनेक शुभेच्छा जनाऊँची। सम्माननीय राष्ट्रपति जो राज्यर अटंती मु सही राज्यर उच्च न्यायालय र मुख्य विचारपति होइथिबारु निजकु धन्य माने करुछि। आपण मानकर बहुत दिन दाबी पूर्ण होइथिबारु मु आपण माननको अभिनंदन जनाऊँची। आज यही न्यायिक परसर को लोकमानक पाई उत्सर्ग करिथिबारु मु बहुत आनंदित मने करुछि एवं सम्माननीय राष्ट्रपति व उड़ीसा सरकार को बहुत कृतज्ञता जनाऊँची। Today's inauguration of Bhubaneswar Court Complex by Honorable the President of India makes it a monumental day for the state of Odisha, symbolizing justice, progress, and the rule of law. The building itself stands tall and impressive, showcasing modern architecture that reflects both strength and accessibility. Bhubaneswar, the capital of Odisha, is more than just a center of administrative activities. It's a city steeped in history, culture, and aspirations. Known as the Temple of City of India, Bhubaneswar embodies the spirit of resilience and innovation. With its rich cultural heritage and rapid urban development, it has emerged as a beacon of progress in eastern India. The judicial court buildings are not just physical structures. They are symbols of justice, democracy, and the rule of law. These edifices serve as the cornerstone of the society's legal framework, where rights are upheld, the disputes are resolved, and accountability is enforced. The design and function of a court building reflects the value and principle upon which a society is founded. The architecture of this building embodies the ideals of fairness, stability, and transparency. Grand entrances, towering columns, and well-lit hallways invite citizens to partake the judicial process. Such buildings not only indicate evolution of the society, but also underline the importance of physical spaces that facilitate this process. The prominent aspect of court building is their role in fostering public trust in the legal system. The visibility and accessibility of these structures encourage civic engagement. Inside the court, justice takes shape. The courtrooms are where evidence is presented, the arguments are made, and the verdicts are rendered. The court buildings often become powerful symbols of justice and righteousness,
They serve as the backdrop for pivotal moments in history. These buildings not only represent the physical manifestation of legal system, but also the values of justice, equality, and community engagement. As we navigate the complexities of modern societies, these structures will continue to serve as the bastions of our democracy, ensuring that the rule of law prevails and that the rights of all individuals are respected. Through their presence and function, they remind us that justice is not merely an idea, but tangible reality to which everyone should have access. Let us cherish this moment and the promises it holds for the people of Bhubaneswar and beyond. Together, in this beautiful city, let us build a future where justice prevails, where everyone's voice is heard, and where a rule of law continues to thrive. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Bande Utkal Jarni. सामाजिक व्यवस्था को स्वच्छ सशक्त करिबारे न्याय व्यवस्थार कौन गुरुदायित्व रही आम समस्त को मन पकई दिवार कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री चक्रधारी शरण सिंह महोदय। बंधुगण से आम आराध्यंकर भक्त आम संस्कृतिर बाहक आम कलार प्रशंसक आम राज्यपाल आम गर्व ए विशेष अवसर में अनुरोध करी माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास महोदय को निज शब्द आमको अनुग्रहित करेंगे। जय जगन्नाथ। आपनो मन को समस्तों को मोर शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। समारोह के मुख्य अतिथि तथा भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य विचारपति श्री जस्टिस चक्रधारी शरण जी, उड़ीसा के माननीय राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री श्री सुरेश पुजारी जी, उड़ीसा उच्च न्यायालय के माननीय विचारपतिगण, मंच पर विराजमान उच्च न्यायालय के माननीय विचारपति श्री जस्टिस संगम कुमार साहू जी, उच्च न्यायालय के अन्य सभी सम्मानित विचारपतिगण, न्यायपालिका के अन्य सभी माननीय सदस्यगण, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और राज्य सरकार के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, बार के सदस्यों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटिंग मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों, मुझे इस न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर आकर बेहद खुशी हो रही है। यह आयोजन न केवल एक भौतिक संरचना के जुड़ने का प्रतीक है, बल्कि न्याय और समानता की और हमारी साझा यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उड़ीसा लंबे समय से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं की भूमि रही है, जहां कानून के शासन को एक पवित्र स्थान प्राप्त है। न्याय प्रक्रिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति हमारी व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां न्याय की नींव निष्पक्षता, पारदर्शिता और सभी के लिए सुलभ पर आधारित है। न्यायपालिका हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ है। आज हम इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन कर रहे हैं तो हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह रीढ़ मजबूत बनी रहे, जिससे यह उड़ीसा के लोगों की बेहतर सेवा कर सके। यह नया न्यायिक न्यायालय परिसर न केवल हमारे कानूनी समुदाय के लिए काम करने के माहौल को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा हमारे राज्य के हर कोने में न्याय तेजी से और कुशलता से पहुंचाया जाए। माननीय राष्ट्रपति
जी, आज आपकी गरमय उपस्थिति इस क्षण के महत्व का प्रमाण है। यह परिसर न केवल बुनियादी ढांचे के विकास का प्रतीक है, बल्कि न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। यहाँ की अत्याधुनिक सुविधाएं हमारे न्यायालयों के कामकाज को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे हमारी न्यायपालिका लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा कर सकेगी। हर संस्थान जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, न्यायपालिका भी जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। यदि हम अपने आप को उत्तरदायित्व नहीं मानते हैं तो बढ़िया अत्याधुनिक सुविधा हो जाए, चाहे कितने भी आपके बैठने का स्थान बढ़िया हो, लेकिन उत्तरदायित्व स्थापित नहीं होता है और जिस क्वालिटी ऑफ जजमेंट इम्प्रूव करना चाहते हैं वह इम्प्रूव नहीं होगी। दुनिया कहती है जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। अंत में मैं आज इस न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान विचारपति, वकील, बार एसोसिएशन सब मिलकर इस परिसर को समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचे, इस दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। न्याय व्यवस्था स्वच्छ हेले समाजर विकासर प्रक्रिया त्वरान्वित हेब। आपणकर ए सशक्त वार्ता को आम चिरदिन हृदय में साइती रखिबु। बंधुगण, मयूरभंज पहाड़र स्थिरता और दंभ प्रतिफलित हुए तांक चरित्र रे। सेठाकार घंच बनानीर सबुजिमा संचरित हो उठे तांक ओठ को आसी सुंदर हसटीए है। लुहा पत्थर परी मजबूत तांक मनोबल एवं से पहाड़ी संस्कृति परी सरल तांकर जीवन शैली। सेथिपाई से समग्र राष्ट्रर गौरव, आम समस्तंकर नमस्या। प्रति ओडियांक छाती गर्वरे हो जाए कुंढे मोट जेतेबेले आमे समस्तंकु कहू राष्ट्रर प्रथम नागरिक आम निज लोक। आपणक करताली सहित अनुरोध करी माननीय राष्ट्रपति महोदय को निज अनुचिंतार आमको गर्वित करेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आजिर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उद्घाटन उत्सव में मंचाधीन ओडिशा राज्यपाल श्री रघुवर दास महोदय, ओडिशा उच्च न्यायालयर मुख्य विचारपति श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह महोदय, राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री श्री सुरेश पुजारी महोदय, ओडिशा उच्च न्यायालयर विचारपति तथा खोर्धा जिला न्यायालयर प्रशासनिक न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू महोदय, ओडिशा उच्च न्यायालयर अन्य विचारपतिगण, अन्य न्यायालयर विचारपतिगण, आईनजीवीगण, विशिष्ट अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, भद्रमंडली समस्त को नमस्कार, जुहार, जय जगन्नाथ। आज नवनिर्मित कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उद्घाटन करी मु विशेष आनंदित। एठारे जातिर जनक महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति अनावरण करिवार अवसर मते मिलिला। यह मो पाई सौभाग्यर कथा। महात्मा गांधी सर्वदा न्याय प्रतिष्ठा पाई अन्याय विरुद्ध रे संघर्ष करथिले। एही न्यायालय परिसर रे तांको प्रतिमूर्ति स्थापन एक प्रशंसनीय कार्य। मु जानिया को पाइली जे एही कोर्ट कॉम्प्लेक्स रे भुवनेश्वर समस्त विचार विभाग कोर्ट एवं ट्रिब्यूनाल कार्य करिवो। यह द्वारा कोर्ट कचेरी काम थिबा जनसाधारण तथा आईनजीवी मानक भिन्न भिन्न स्थान को जावाक पड़िबो नाही। आईन प्रक्रिया सहित जड़ित लोक मानकर संख्या वृद्धि को दृष्टि रखी एपरी एक कॉम्प्लेक्स निर्माण करिथिबारु मु राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊछि। यह द्वारा कोर्ट कार्य सुचारू रूपे संपन्न हो पारिबो बोली मोर आशा। यही शुभ अवसर आपण मानकु शुभेच्छा जनाऊछि। Ladies and gentlemen, today is of course a momentous day for Odisha judiciary
marking the inauguration of this judicial court complex at Bhubaneswar. I am told that this complex is one of its kind and has been constructed in a sprawling area. The development of the complex is well conceived and is designed to meet the current and future needs. I am happy to note that the requirement of the different segments have been kept in consideration and various facilities have been created accordingly. This is how there are facilities for creche, ramp, vulnerable witness deposition center, separate washroom for women, Divyangjan and transgenders community. It keeping with the new technologies which are meant to accelerate the process and increase access to justice, facility and digitization room and virtual courtrooms have been provided for. I commend the step of using solar energy, which is an environment-friendly initiative. These features, along with the other modern amenities, will help in smooth functioning of the judiciary fraternity active here. This will result in quicker delivery of justice, which is the ultimate objective of all such efforts. सुधीवृंद न्याय प्रदानर विलंब हेले न्याय प्रार्थी व्यक्ति ताहा न्याय न पाइबा सहित समान जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड उक्तिटी एही दृष्टि प्रासंगिक गत सेप्टेम्बर 1 तारिख दिन उच्चतम न्यायालय द्वारा नवा दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका सम्मेलन में उद्यापनी उत्सव में मु जोग देइथिली एवं कहिथिली कल्चर ऑफ आडजर्नमेंट द्वारा गरीब लोक माने अधिक कष्ट भोगुछंती बारंबार कोर्ट कचेरी को दौड़िबा पई सेमानकर अर्थबल बा लोकबल न थाए सुतरां बारंबार तारीख कुंचाइबा प्रक्रिया रे जेपरि पूर्णच्छेद पड़े ताहाकू आपण माने प्राथमिकता देबे बोली मु आशा करुछि विचारपति एवं आईनजीवी मानक सहयोग रे कल्चर ऑफ आडजर्नमेंट को बंद करा जाय पारिबो एवं साधारण लोकंकू त्वरित न्याय प्रदान करा जाय पारिबो देशर साधारण लोकंको स्वार्थ को दृष्टि रखी ए दिगरे आपण माने विहित पदक्षेप ग्रहण करिवे बोली मु आशा पोषण करुछि अनेक समय रे भाषा जोगु साधारण जनता न्यायपालिका ठरू दूरे जाउथिबा लक्ष्य करा जाउछि न्यायप्रार्थी साधारण लोकटी बुझी पारु नाही जे वकील महाशय ता पई की जुक्ति करूछंती बा विचारपति महोदय ता पई की राय देउछंती तेणु पर्यायक्रमे लोकमानक भाषा रे न्यायपालिकार कार्य संपादित हेबा आवश्यक अवश्य ए क्षेत्र रे केतेक प्रशंसनीय पदक्षेप ग्रहण करा जायछि गुरुत्वपूर्ण रायगुड़ी को आंचलिक भाषा रे अनुवाद करा जाय जनसाधारण अवगति निमंते उपलब्धि करा जिवा उचित मु जानी खुशी हेले जे न्यायालय राय वर्तमान ओडिया और सांताड़ी भाषा रे अनुवाद करा जाउछि एवं ए सब को अनुदित राय सुप्रीम कोर्ट एवं ओडिशा हाईकोर्ट को वेबसाइट रे उपलब्ध हेउछि ओडिशा सरकार आईन विभाग पक्षर अनुदित स्थानीय आईन गुड़िक वेबसाइट रे उपलब्ध बोली जानी मु खुशी हेली आशा करे यह लोक मानकर आईन साक्षरता को वृद्धि करिबारे सहायक हेब जिला न्यायालय एवं अन्यान्य न्यायालयर सक्रियता उपरे त्वरित न्याय प्रदान प्रक्रिया मध्य निर्भर करे कारण साधारण लोक माने न्याय पाइबा पई विशेषतः एही सब न्यायालयर द्वारस्थ होइथांती मु जानिबा को पाइली जे ओडिशा रे ग्राम्य न्यायालय प्रतिष्ठा करा जाउछि यह द्वारा न्याय व्यवस्था लोकंकर निकटतर हो पारिछि यह एक प्रशंसनीय पदक्षेप यही प्रक्रिया आहुरी व्यापक हेब बोली मु आशा करुछि स्वजन मंडली वर्तमान वुमेन लेड डेवलपमेंट उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करा जाउछि विभिन्न विश्वविद्यालय रे समावर्तन उत्सव रे जोग दे मु लक्ष्य करुछि जे आम झियो माने आम पुओ मानक अपेक्षा अधिक सफलता हासिल करछथि आईन व्यवस्था रे मध्य महिला संख्या वृद्धि पाइबा आवश्यक रही यही परिप्रेक्षी आईन क्षेत्र में महिला सशक्त करने उत्कल गौरव मधुसूदन दास प्रयास विषय में मु उल्लेख करने को चाहे ब्रिटिश सरकार अमल
आईन उपाधि लाभ करी महिला माने वकिलाती करिवार सुजोग पाउ नथिले। मधुबाबू महिला मानक वकिलाती करने सुजोग देवा निमंते पाटना हाईकोर्ट ठारू प्रिवी काउंसिल पर्यंत से कावर विभिन्न संस्थार द्वारस्थ होइथिले। परिशेष ए क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि करुवा लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 रे संशोधन करा जाइथिला, जहा फल भारतर महिला माने वकिलाती करिवार सुजोग पाई पारिथिले। मु आशा करुछि आम झील मैंने मधुबाबू उद्यम को सम्मान जणाई अधिक रु अधिक संख्यार आईन व्यवस्था योगदान करेंगे। सुखर कथा आईन वृत्ति में जोग देवाई आम झील मध्य आग्रह परिलक्षित हो जाना पाइली जे वर्तमान ओडिशा जुडिशियल सर्विस रे 52% पुरुष अधिकारी थिबा बेले 48% महिला अधिकारी कार्यरत अच्छा। महिला अधिकारी मानकर संख्या आगामी दिन में जे आहुरी वृद्धि पाइब ए विषय रे मु आशावादी। सजन मंडली, भारत सरकार न्याय व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिसंती। आपण माने जानिसंती जे गत जुलाई 1 रु देश रे भारतीय न्याय संहिता को कार्यकारी करा जाउछि। दंड संहिता स्थान न्याय संहिता कार्यकारी करबा एक समयोपयोगी पदक्षेप। यह द्वारा एक उपनिवेशवादी अवशेषर अवसान घटी। दंड स्थान में न्याय को गुरुत्व देवा एक सकारात्मक दृष्टिभंगीर परिचायक। साधारण लोक निर्भर किपरि निर्भय किपरि न्याय व्यवस्था सहित जोड़ी हो पारिबे ताहा एक महत्वपूर्ण प्रसंग। अनेक समय साधारण लोक मैंने कोर्ट कचेरी को आसवा केवल आर्थिक असुविधा कारण अमंग हुअन्ति ता नुहे, कोर्ट कचेरी प्रति सेमानकर मनरे भय मध्य थाए। ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम मु कहिथिली जेपरिकी गोटे रोगीटे जेतेबेले हॉस्पिटल को जाए व्हाइट कोट देखी बेले बेले से भय करिथाए तार ब्लड प्रेशर बढ़ी जाए थाए। सेहीपरि जड़े कोर्ट कचेरी रे न्याय आशारे जाइथिबा व्यक्तिर मध्य जेहेतु से बहुत जिनिसर अज्ञ तेणु से शंकी जाए थाए। वकील और हाकिमान को देखी से माने शंकी जानती मन कथा कही पारती ना। स्वाधीन भाव में भय स्थान ना, स्वाधीन भारत में भयर स्थान ना। जदि जड़े साधारण नागरिक शासन शासक प्रकाश प्रशासक पुलिस और हाकिम को भय करे ताहले प्रकृत अर्थ ता पाखरे कौन स्वाधीनता अच्छी। यही परिप्रेक्षी में विश्वकवि रवींद्रनाथ कविता मोर मन पड़ू, व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जेउठी बिना भय मुंड टेकी चली होउथिबो सेहीपरि एक आदर्श राज्यर परिकल्पना करिसंती विश्वकवि एवं सही आदर्श व्यवस्था आड़क भारत उन्मुख हेउची। एहा से ईश्वर को निकट में प्रार्थना भी मध्य करिसंती। सुतरां कोर्ट कचेरी सरकारी दफ्तर थाना आदि रे एक आत्मीय वातावरण रहिबार आवश्यकता रही। मु सबु बेले कही थाए आज मध्य ताकु दोहराइबा को चाहे। गाँ गहली रे जेते बेले आमे पिला थिलु आईनज्ञ शिक्षक एवं डॉक्टर एमान को भगवान मानते। आज मध्य क्योंकि कहीं ना ये आईनर प्रत्येक पृष्ठा प्रत्येक धारा एमान को जना तेणु से गले आमर जो भी असुविधा रही ताहा दूर हो भी लोक मान मनरे अच्छी तांकर भावना को सम्मान देवा ताकू उपशम करवा आईनजीवी मानकर कर्तव्य। एवं आमे वर्तमान ए जुगरे जेतेबेले आमे स्वप्न देखुचे जेतेबेले भारत स्वप्न देखुची 2047 सुद्धा से एक विकसित राष्ट्र रे परिणत हेबो से दिन जदि साधारण लोकटीए एभरी असुविधा रे पड़िथिबो ताहले ताकू कोन आमे विकसित राष्ट्र कहि पारिबा। तेणु समस्त को अनुरोध करिबे विकसित राष्ट्र करने को हेले समस्तंकर सहयोगर आवश्यकता रही, समस्तंकर कर्तव्यर अवस्था रही
कर्तव्य को पालन करिबार आवश्यकता रही। आज एठारे नवनिर्मित कोर्ट कम्प्लेक्सर उद्घाटन अवसर में मु आपण मानक पुनर्बार शुभेच्छा जनाऊँगी एवं समस्त मंगल कामना करी मोर वक्तव्य सांग करछि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी। कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। अनुरोध करी पुलिस बैंड को परिवेषण करेंगे राष्ट्रगान। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी। All right, good afternoon. Thank you all for sticking out for this last session of the day. My name is Vamsi Sangavarapu. I'm here with my colleague Ritesh Rai. We are from American Express, here to talk to you about how we are elevating our internal serverless function as a service platform with WASM components and WASM Cloud. And we are from American Express, like I said. Yeah, so how many of you guys have used American Express credit cards? Oh, quite a few. Everybody likes the platinum card, right? Especially people who like to travel. So when you think of American Express, I think you think about credit cards and the incredible customer service. We are also a tech-forward company. We, as a company, make a lot of open source contributions. We build frameworks, tools, and utilities which make that incredible experience possible. So we are from the platform engineering team, and yep. Yeah, so one of the platforms that I lead is called, I don't say the name, but it is a function as a service platform. What we will talk about today, I know you have had I know you're all WASM enthusiasts, you know about the technology, you are here for a reason. You've heard a lot of talk about the technology, but we are slightly different. We're going to start talking about what we are using WASM for. So our purpose is not to somehow find a use case for WASM, but we have a platform, and we are trying to see how we can take the platform to the next level with WASM. So to begin with, we'll start talking a little bit about what this platform is. And why do we need this platform? So as an application developer, when you are setting out to solve a business problem, write some application, write a microservice, before you get to the actual core part of business logic, there is a lot of other concerns that are on your mind. You need to make a lot of decisions. You want to start with what's the development framework I'm going to use. You may have a language of choice, but there's a lot of options in terms of what frameworks to use. You need to make decisions on what are other utilities that you can reuse in the enterprise context. You need to think about deployment pipelines. You need to think about how am I going to observe this once I put it in production, what observability tool chains and platforms I need to use. And you're going to talk about where am I going to deploy it, how am I going to operate it, how am I going to scale it. And between all this, you also have to think about the real application logic. So all these big clouds are really distracting you from the core business of why you are setting out to do the development. And our function as a service platform is trying to take all those big clouds out of your mind as a developer so they can focus on business logic. That's the core purpose of this function as a service platform. And this is an ecosystem. So it's a platform, there's a framework, there are tools that come with the platform, and
there is a strong community around it, which is super critical for anything to be successful. And as a platform, this is the core of it, right? So the serverless platform, this is what we manage the infrastructure, we take care of operating it, we take care of scaling it up and down as necessary. I will talk about the next 2 points a little bit, resource sharing and interfunction calls in a double click later. But the platform also comes with pipelines, observability out of the box. So people don't have to think about observability, it comes with running on the platform. And many of these functions, or we call them functions, are APIs. And these APIs have to be secured. And that requires a lot of work to integrate with the tooling that is necessary to provide authentication and authorization. All of this again comes out of the box with the platform. And then from a framework perspective, all these functions, they provide a contract, they expose an interface. And these interfaces are written in OpenAPI spec. And we encourage contract first development. And there is a standard workflow that is used to develop these functions. And we have multiple runtimes. We have a JVM-based runtime that's used to write functions in Java and Kotlin. There is a Node.js-based runtime that's used for writing functions in JavaScript and TypeScript. And talking about some of the decisions that developers have to do, we also make some of these decisions. So, for example, on the Java side, we use Vertex as a library for providing asynchronous programming interfaces. All in the interest of developers getting to their business quickly without having to worry about all these additional concerns. And every function has to deal with some amount of encryption. They need to worry about how am I going to manage configuration. When we talk about configuration, contract configuration as contract and versioning, right? Contract versioning as well as the implementation versioning. OpenAPI spec, again, in a large enterprise, there are lots of different varieties how people do things. And there are schema linters to make sure that the spec is as per the standard. Makes it simpler to operate and manage. And once again, because of all these features, there's a lot of developers who gravitate towards it. And because they are all now, these low-level decisions are made for them, there is standardization. They can learn from each other. They are all operating on the same platform, using same libraries, same ways of developing workflows. So there's a lot of cross-learning and contributions that are happening all around. So that's our ecosystem. And this provides for different personas, different benefits. So if you think about developers, for developers, we said all these cross-cutting concerns are addressed so that developers can, minute one they start talking about a problem, they can get to the business logic quickly. They can just leverage everything that is there. One other thing we provide for the developers here is, because of the standardization, internal mobility. Right? You go from team to team, you don't have to learn new technology, new libraries, new ways of doing things. They can take their learnings and their expertise and be productive on a new team right away. Data architects, because these are APIs that are documented in a standard way, the platform also provides ways to easily discover them, avoid duplication of APIs because they are discoverable. They can reuse where they don't have to develop new, and gives a control plane for management and governance. And information security. Again, one place to look at what APIs are there in the company is something that they really love, because trying to find in a large enterprise, what are all my endpoints, where are they? That is a big problem, and giving a single point of enforcement for any security controls is a big benefit and makes the burden on InfoSec that much less. And SRE, again, from an operations perspective, because of the out-of-the-box observability, your enterprise Hello World already comes with all these things built in.
logs, metrics, distributed traces as a distributed platform and microservices, super important. And all of this comes pre-built with this platform. And what do we use this for? Some of the typical use cases, we have a lot of backends for frontends. So one of the other teams I have is a front-end framework that is used to build the website that powers AmericanExpress.com. When you log in to manage your card, that website is built on one of our frameworks, and a lot of backend API calls are built on this function as a service platform. And like I said, a lot of these APIs are IO-bound workloads. They hit a database, they gather some data, they make some updates and things like that. And from that to also micro monoliths, there are some entire applications that are decomposed into very small functions. All of them are running within this platform. What makes this so attractive? Other than everything else that we talked about, from a platform perspective itself, the deployment unit is not a container. It is a small package of functions. Like if it's Java, it is a jar, and it's for JavaScript, it's a small bundle of JavaScript that's getting deployed. Because of smaller size compared to a big container that needs to be deployed and started, the cold starts are much better in this platform when you're deploying functions. And once again, from a large enterprise context, many times applications are organized around lines of business based on teams who are owning it. So every team has their own application, they deploy it and they operate it. And when you need to build a journey that cuts across applications, they have to hit the network. They have to leave the box, they have to go from their pod to somebody else's pod, and that's inherently inefficient because you are leaving the box and you are hitting the network. What we do with this platform is we blur those lines between applications and ownership and lines of business. All functions are running in the same platform, and that gives us some additional levers to co-locate functions that are required in a customer journey in the same pod. So function-to-function calls are super efficient. They don't hit the network. And because we are aggregating the workloads across application boundaries, we have the ability to further optimize resource utilization. And these are important as we talk about WASM, because this is the USP of this platform that we want to elevate to the next level. Just a little bit of a quick scale of the platform. 1,500, give or take, active developers writing code every day and deploying it on this platform. And this is probably one of the biggest platforms that unifies developers across the company. There are a lot of developers, I probably can't say how many are there, but they all are working on different applications and slightly different technologies and tool chains. And this is one unifying factor because of what we have talked about. And so with this widely successful platform, when we think about where do we go next, what else do we need to do? Engineers that we talk to, we've talked about the Java developers and the Java and Kotlin developers, JavaScript, TypeScript developers. There are certain teams who are really interested in Go, and they only want to develop in Go, but they want our platform. So there is a need to support them on this platform. Similarly, there are some data science developers who only want to develop in Python because that's their ecosystem, that's their expertise, but they want to leverage the platform. So what I want to do is I want to bring these other ecosystems into the platform, and I want to do it in a way that I don't have to write one more runtime for Go, one more runtime for Python and maintain it. So that's one of the things we're looking at, additional language support without corresponding increase in the runtimes. And then while we have a high density of functions compared to containers, there is still some common libraries, database drivers, things like that are bundled into each of the function packages. And we want to see how we can break it out and make the functions even smaller, further increase the density. And as we are looking at exploring these options to do this,
especially like, one runtime for multiple languages and very, very small, tiny functions. That's when we started exploring WASM components. I won't spend much time on this, you all know. You can write your logic in any language and then target WASM as the compilation target. And the single runtime can support it. So the polyglot nature of WASM, super important for us. And as we do this increased density of functions, we want to make sure we do it responsibly and safely. And the strong sandboxing that WASM provides really helps with that. Language interoperability, that is a bonus. Today, when function needs to talk to another function, I have a Java function talking to a JavaScript function, they have to serialize and deserialize back into JSON from native objects. That is a penalty that, we have optimized it to the extent possible, but with WASM components and WRPC, and it can get to the next level where a component written in Go and a component written in REST, and they can talk to each other, and we don't have to serialize to a text-based format, and the interoperability is much strong. So to take you through our journey of how we have explored this and where we are now, I'll call upon Ritesh. Thank you, Vamsi. So as a platform engineering team, we wanted to maintain a single polyglot runtime with increased density of co-located functions. At the same time, we want each function to be completely sandboxed and isolated. So WebAssembly component model enables us to do that, along with providing some additional features like composition and reuse. So that is when we decided to start building our own fast WASM runtime on top of WASM time. So during this process, we realized that we need to build a lot of core ecosystem components for WASM, right? That's when we started looking out at some open source projects. Is there some project out there, from which we could, reuse rather than building it all ourselves? Because it's not just building it, we'd have to maintain a lot of these components, and considering the evolving ecosystem of WebAssembly, that's a lot of work. One particular project that stood out at that time was WASM Cloud, CNCF WASM Cloud. Initially, WASM Cloud, to me, I looked at it as Kubernetes for WebAssembly, right, where I could deploy WebAssembly. But there are some key benefits that WASM Cloud provided, key features. If I want to highlight some of them, they are topology agnostic functions, right, capability providers, and dynamic linking between components and capability providers. I want to elaborate a couple of those features a little bit and explain why it is important for us as a fast platform. Our functions today have some compute and I/O, right? And where WebAssembly is at this point in time, we know that we cannot say that I can just take any code and compile it to WebAssembly and run it efficiently. For example, if I have to write some code that interacts with the relational database and I want to manage a pool of connections, I would choose to write it as a native binary. The WASM Cloud capability providers allow me to do that today, right? And while I can write it as this particular database code as a native binary, my function code, which has the rest of the compute, could still be compiled to WebAssembly. So the dynamic linking with capability providers allow my function code to interact with this native binary code in a seamless manner. So tomorrow I could decide to actually swap out this native binary with an actual WebAssembly component when we think that we have reached a point where we could actually write that piece of code in WebAssembly. That's one advantage, right? There are a couple of other advantages which we actually want to highlight from a platform engineering perspective. Today, we deal with a variety of different data sources, and when we want to increase the density of functions, we want to increase the number of instances of a function, we do hit certain limitations. Some of our data sources could be legacy data sources which have certain connection limits, right? So capability providers allow us to scale
the capabilities like data source I/O and the function code independently, which is another added benefit. It also allows us to reduce the size of our function binary, right? They are no longer doing all these heavy lifting of the data source connection and all of that. It's offloaded. So with that, we decided to build our fast runtime on top of Wasm Cloud. And as we mentioned, as Vamsi covered in the earlier slide, our whole goal as a fast platform is to offload all the responsibilities from the developer. A developer in our company should be only responsible for writing function code, which consists of business logic. Everything else should be taken care of by our platform. So in this slide, I want to walk you through the process of how we take that function code and compile it to a WebAssembly and deploy it in our runtime. So the developer will write function code and they just push this function code to a repository. Our deployment pipeline will take that function code and compile it to a Wasm component. We call it the function Wasm component. And then we decorate it with a security decorator, which adds certain auth and auth capabilities to it, and then some other